Good evening, friends. So, again, we are going to take one new topic about the same chapter, that is electoral politics. The topic is what make an election democratic. What make an election democratic, that we are going to see here. So, in this topic, we will cover mainly the features that are present in democracy. That features we will relate to the context with election. अगर इलेक्शन में डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, अगर वो मैच करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो चुनाव हो रहा है वो डेमोक्रेटिक है। अगर वो नहीं मैच करते हैं तो चुनाव को बोलेंगे अनडेमोक्रेटिक है। अंडरस्टूड। तो जैसे हमारा देश है डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ जो चुनाव होता है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को मैच करके होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो देश है, अब लोग सोचेंगे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल होता क्या है। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी की मूल धारणा जो होनी चाहिए किसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए। जैसे जो वोट होता है, वोट बराबर होना चाहिए, या कोई अमीर दे या कोई गरीब वोट करे। किसी कॉन्टेस्ट के लिए, कोई भी कंटेस्टेंट के लिए अगर कोई वोट पड़ रहा है तो उसका जो वैल्यू होनी चाहिए वोट का, दैट शुड बी इक्वल वैल्यू। मीन्स वन वोट will be same for whether it is whether they are small group people or they are high class people, or whether they are poor people or or whether they are from other languages, from other state, or they have some they are not abled one, they are abled one. All that difference should not be mattered when that is related to election. तो election में पहला क्या वैल्यू होना चाहिए कि vote should have equal value. Means one vote that should have equal value, and this one vote advantages should be for one person only. And if it is richer person or any person who is very privileged one, that vote should not be turned into two shares. Okay, it's not be said that you are giving one vote, then it is your own one vote because you are poor people, and rich people is giving one vote, then that will be equal to two vote. That should not matter in democracy. That will be against the spirit of democracy. So we can say that here first point, that if it matches, then we can say that the election that is being conducted, that is democratic one, if one vote is equal to one value. I think understood. First point that should be there in any election. So that's why. And second point, we will see that the parties candidate should be free. If any, not only one party or two party, there should be no autocracy. If any election is going on, or if any election is to be held, so that should be related to democracy. Means each and every party should get chance to contest for the election. So that is the second option, that I will say that if this second option matches, then that will said that the election is democratic one. Okay. And third one is that election should be held at equal intervals of time. Okay, so if it is not there that election held this year, and after that again it will be held, and then after 10 years or 15 years or 12 years, or it will not be happen. और फिर in some cases, in some scenario that अगर किसी जो चुनाव होता है, तो चुनाव जो हो रहा है वो 10 साल के बाद हो रहा है या 5 साल के बाद हो रहा है, या जो सरकार वो जब चाहती है तब कराएगी, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव हो रहा है तो डेमोक्रेसी अगर कंट्री है तो जो चुनाव होता है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे होना चाहिए। इसका मतलब चुनाव हर तय वक्त पे होना चाहिए। सो दैट ओनली इफ इट इज़ हैपनिंग, देन वी विल से दैट द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक। आई थिंक अंडरस्टूड। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक सब लोग आप समझ गए हैं। तो पहला क्या होना चाहिए कि वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू, एंड सेकंड वन इज दैट people should be free to choose any parties or any candidate what they desire to have, and second one, parties should be free to contest for the elections. Okay, so these are the values. And the fourth value that we discussed, that is election should be held at regular intervals. Okay, this is the fourth point. And now here fifth point, that is the main point that will enlarge your mind, that the election that is conducted, that is democratic or not. First, that it is that election should be conducted in free and fair ones. ये जो इलेक्शन होता है ये किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। कोई इसको जो इलेक्शन हो रहा है इसको धूमिल ना कर पाए। ये बहुत फ्री और फेयर होना चाहिए, और एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो इलेक्शन को सही तरीके से कराने में कराए। और अगर ये होता है सही तरीके से, सबको इक्वल चांस मिल रहा है, सही तरीके से काउंटिंग हो रही है, सही तरीके से उसकी रिजल्ट अनाउंस हो रही है, देन वी कैन से दैट इफ द इलेक्शन इज हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर,
then that will support the spirit of democracy. And this way we can say that the election that is held, that is pure democratic way. I think everyone understood this topic. तो डेमोक्रेटिक वे कैसे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कब बोला जाएगा, जब जितनी भी प्रिंसिपल डेमोक्रेसी की है, इक्वालिटी, सेलेक्टिबिलिटी, पीपल्स डिज़ायर, पीपल चॉइस, ऑल दैट इज मेट in conducting any election, so that election will be said that it is democratic election. तो धन्यवाद, आपने मेरी बात सुना. इस जो टॉपिक था, why do this election is conducted in democratic, what make an election democratic, so these all the points is there in this. Hope you will understand this, and God bless you. Again we will meet for the new topic, and slowly by slowly we will cover all the topic and we will complete this chapter, and this chapter will be very easy to understand, that it will help you to score good marks in your academics. Hope you will help me, motivate me, and so I will help you. Thank you.